Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we are discussing important current affairs for 19th of Feb. The session will be quite interesting and important. Students, stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Union Agriculture Minister who have launched Bharat Vistar. It was launched in Rajasthan. Then Government of India has unveiled India's first comprehensive AI governance framework. We will be discussing it. Then menstrual health was recently Supreme Court has declared menstrual health as a fundamental right under the Article 21. This is quite important, students. Then President of India Draupadi Murmu ma'am inaugurated the sanitary celebration of all Chiki script in New Delhi. All these things and many more will be discussed here. Stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Let us revise some one-liner, students. Let's start with national news. WWF, that is World Wildlife Fund of India, has developed Goa's first biodiversity and cultural feature map for school students. Then India and UK has signed a social security agreement for temporary employees. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Seva Tirath and Kartavya Bhavan complexes. Then CDOT, that is Center for Development of Telematics, and Rashtriya Raksha University, they have signed a memorandum of understanding to boost telecom and cyber security innovation. We discussed this day before yesterday. Then Black Swan Summit India began in Bhubaneswar to boost AI and digital finance ecosystem, and AI Summit is currently going on in New Delhi at Bharat Mandapa. Then Alwar became India's first district to achieve 100% insurance coverage under Insurance for All by 2047. Alwar is in Rajasthan. Then Rajnath Singh, our defense minister, has flagged off joint India expedition to Mount Aconcagua. Where is this? This is in Argentina. Next, IIT Madras Research Park, they have launched 600 crore rupees Unicorn Frontier Fund for deep tech startups. Unicorn is when you achieve $1 billion in your market cap, and deep tech startup include your robotics, cybersecurity, quantum, AI and everything. Then India-US trade deal has opened $118 billion global textile market for the government, and it was the interim deal that was signed. India-US interim deal. Next, Plast India 2026 kicked off in New Delhi. Here the focus was on plastic, on how we can make plastic sustainable. Then Spain became the first European nation to ban social media for the children under 16. VOC port became the first in India to deploy anti-drone system. Where is this VOC port? It is in Odisha. I correct? It is in Tamil Nadu, not Odisha, it is in Tamil Nadu. Then MCA, they have approved the merger of 17 power grid subsidiaries under corporate restructuring plan. Then Delhi Police, they have launched the Operation Shastra to curb online threats and fear mongering. Center, that is the Government of India, Nagaland government and ENPO, they have signed an agreement to form Frontier Nagaland Territorial Authority. Then Goa, they became the second state to publish the Bird Atlas. Agriculture Minister or Agriculture Ministry, they have signed a memorandum of understanding with the Department of Post for fully traceable agri input sample logistics. Then 39 Surajkund International Craft Mela 2026 began in Haryana with the theme Vocal to Global. And PFC board, they have cleared the merger with the REC Rural Electrification Corporation to boost scale efficiency for the NBFCs. Then Kerala, they have launched Neophyte ID for invasive plant detection. And Andhra Pradesh, they have announced the exclusive 30-acre women industrial park. Next is India. They have risen to 45th rank in the Network Readiness Index. Yota and Bhashini, they have deployed sovereign AI cloud showcasing India's readiness for population scale AI. Then India has been named as the country of the year at the BioFact 2026 in Germany. Telangana, they have launched ICOM to boost the AI ecosystem and global innovation. Then Assam State, they have launched Atal Vichal Agragami Assam scheme that will boost the research and innovation in the agriculture sector as well as with the help of AI.
Then Gujarat government, they have signed a letter of intent with Starlink to achieve Digital India vision, and also Starlink has partnered with Maharashtra government in order to provide satellite internet even in the remote areas, and along with government in Gujarat state also we will be seeing that satellite internet will be provided by Starlink. Then State Bank of India, they have crossed 10 lakh crore rupees market cap and has joined the elite club of the India's top firms. Then Mumbai's Coastal Road became India's first musical path playing Jai Ho. Then Delhi, they have launched Lakpati Bitiya Yojana for the girls from economically weaker families. Then Delhi, it became the first state to partner with Bharat Taxi cooperative platform to structure the urban taxis services. And Bharat Taxi, this will be basically a rival for the Ola and Uber. So these were your some one-liner, students. Let's move on. Now students, let's move to the main content, that is national affairs. Our agriculture minister has launched farmers digital companion Bharat Vistar in Rajasthan. First of all, this Bharat Vistar, this is what Bharat Vistar is, your Bharat virtually integrated system to access agriculture resources, correct? And it was launched in Jaipur, Rajasthan, launched by Shivraj Singh Chauhan. Very important. This is an AI driven platform that will integrate various agriculture stacks, India's federated DPI that will consolidate the farmers registries, land records, crop data with farm practice packages, right, of the ICAR. So basically what is this? All the records, land data, right, and all the registries, right, the circle rates, the market rates, everything for the particular farmer will be maintained here in the agriculture sector, correct? Take a note of this. This will be an AI driven platform and this will integrate the agri stack. Agri stack is basically nothing, all the agri services, right, related to the agriculture here, correct? And the farmers will be able to access these services under this through a toll free helpline number, that is 155261. This toll free number or this number, it will be powered by an AI voice assistant by the name Bharti, correct? So digital companion Bharat Vistar has been launched that will be providing multiple services related to land records, land data, right, circular, your circle rates, your crop data, your farm practices, everything. AI will be used here and farmers can access the services using toll free number, that is 155261, and AI companion will be assisting you on your phones, that is by the name Bharti, correct? Then this Bharat Vistar, it has been launched in first phase in certain states, right? This is the phase 1 that has been launched, and in the phase 1 it has been launched in Maharashtra state, in Gujarat, in Bihar and Rajasthan, right students? Next, here you can see the helpline number, AI focused things, right? You can get weather forecast, pest alerts, soil health, market prices, land records and everything. Next is Government of India. They have unveiled India's first comprehensive AI governance framework. What is this AI governance framework basically talking about? This means that we will be using AI in a secure way. We will make sure there is transparency. AI won't be used for any harmful activities, right? It will be used for the benefits in various sectors. The sectors can be education, the sector can be defense, right, healthcare, agriculture. So in these sectors, right, we will be making sure that AI is used in a positive way, in a safe and trusted way, and all the innovations that will be coming in these sectors, they will be in positive format, right? That means they will be enhancing those sectors, right? So certain principles have been outlined here, that is the trust is important, right? Focus will be on people first approach, then innovation will be more focused here, fairness will be allowed, right? That means it will be transparent, then there will be proper accountability, and safety and sustainability is the main practice that will be promoted. Moving on, Supreme Court, they have declared menstrual health as the fundamental right under the Article 21, right? Very important students, and it was much needed there in today's world, correct? And Article 21, this is basically right to life and dignity. Article 21 is right to life and dignity, correct? Very important students, take a note of this.
So under the Article 21, now it has been declared as menstrual health has been declared as the fundamental rights. Now all the government and private schools must provide free sanitary napkins to the girls between the class 6 to 12th. So free sanitary napkins will be provided here both in private schools as well as the government schools. So here also the schools now must ensure proper gender segregated toilets with running water, soap should be provided and safe disposable systems of these sanitary pads. Correct? Take a note of this, students. This is quite important that I want you all to take a note of. Next is President of India Draupadi Murmu ma'am has inaugurated sanitary celebration of Oi Chiki script in New Delhi. Correct? This is sanitary celebration, means 100 years of celebration. During this event, President Draupadi Murmu ma'am has released a commemorative coin and a special postage stamp and facilitated 10 achievers from the Central Committee for their contribution to promoting the script. Correct? This event was organized by the Ministry of Culture to mark 100 years or the sanitary years of the script, that is All Chiki script. It highlights a powerful symbol of the Santal identity and a vital tool for preserving the Santali language worldwide. Right, students? Next is Indian Army. They have hosted the first ever UN fellowship training program on SALW control in Jabalpur, Madhya Pradesh. What is this SALW? Small Arms and Light Weapons Control. I repeat, Indian Army, they hosted the first ever UN fellowship training program on these small arms and light weapons specifically for the Asia Pacific region. It will be from 16th of Feb till 6th of March it will be conducted. It will be at the Military College of Materials Management in Jabalpur, Madhya Pradesh, marking the first time the program is being held in Asia, and in Asia too it will be held in our country, India. Right, students? Next is NHAI, National Highway Authority of India, under the Ministry of Road Transport and Highways. They have launched a first of its kind ecological initiative to develop dedicated pollinator or bees corridor along the national highways as a part of sustainable infrastructure development program. Right now, this is a dedicated pollinator corridor. What is pollination? Basically, pollination is when bees, they carry pollen grains from male plant to or from male flower to the female flower, right, for pollination. That is pollination. Correct? So a dedicated corridor has been established here where you will be seeing multiple beehives will be there, right, and these beehives will be acting or they will be contributing towards the pollination. And this is NHAI. They have developed this first bee corridor. This is along the national highways, and this project will reduce the ecological stress on the honeybees and other pollinators while enhancing the agriculture activity and biodiversity. All these fruits, all the flowers you see, they are the cause of pollination. If pollination stops, then you won't be seeing any fruit, you won't be seeing any flower in the market. Next is Tamil Brahmi inscriptions discovered in the Egypt's Valley of the Kings, and this is a significant discovery, students, that archaeologists around 30 ancient inscriptions has been discovered inside the rock cut royal tombs in Egypt's Valley of the Kings, a UNESCO World Heritage Site that is showing that India's Tamil Brahmi, Sanskrit and Prakrit languages were also present in the tombs or in the Egypt's Valley, right? In Egypt they were present at the time. That means our culture, our language is very old and it was spread all across the world. Correct? Very important. And these scriptures or these ancient sites, right, they are 1st to 3rd century of Common Era, and key inscription here is Sikai Quran, found 8 times across 5 tombs. Very important, students. Next is India's first national biobank for LSDs launched in Ahmedabad, Gujarat. LSD is your lysosomal storage disorders, right? So this is a national bank dedicated to the LSDs, found at the Foundation for Research in Genetics and Endocrinology, that is Frisch Institute of Human Genetics, that is in Ahmedabad, Gujarat. This will promote research and diagnostic and therapy development here, right? And it is India's first national biobank. Moving on to banking and finance, DFS, Department of Financial Services, they have recently released the socio-economic impact analysis of incentive schemes at Chintan Shivar. I repeat,
Recently, Department of Financial Services, it comes under the Ministry of Finance. They have recently released the socio-economic impact analysis of incentive schemes for promotion of RuPay debit card and low value Bhim UPI, that is person to merchant transactions. Right, the report here assesses the effectiveness of the government's incentive framework, right, in promoting the digital payment. We know that India's digital payment has grown significantly because of UPI, and it has been a game changer, correct? So further, to drive the financial inclusion nationwide, certain incentives are given by the government, correct? And here, this particular socio-economic impact, if we talk about it, this social impact analysis, this is an initiative by the Department of Financial Services, and it is basically done so that we can understand the dominance of UPI. We can understand how UPI is working in India, what are the benefits out of it, right, and how secure it is, what are the merchants using it, or still the cash is utilized in the markets, because if cash is utilized certain way, we can say there is a black economy. So digitalization will somehow, you will be seeing in future, students, will be eliminating the corruption. Also, we are seeing that the digital transaction has surged nearly 11 times if we compare the year 2021 till 2025. So 11 times rise has been seen in the digital transaction, and all the credit goes to UPI. UPI was launched by National Payment Corporation of India. Next is RBI has approved Airtel Money to operate as a Type 2 NBFC ND. I repeat, Airtel Money, the subsidiary of Bharti Airtel, they received the certificate of registration from RBI to operate as a Type 2 non-deposit taking NBFC investment and credit company. Correct? The deposit rules here are they cannot accept public deposits, non-deposit taking NBFC. Correct, students, take a note of this. Here, being a non-deposit taking NBFC, Airtel Money, right, because now they have been given this non-deposit taking NBFC, correct? So Airtel Money is prohibited from accepting public deposits, ensuring the adherence to RBI's prudential norms. The company is authorized to engage in credit and investment related activities including lending and financial transaction, but they cannot accept deposits from public. Next is IDFC First Bank. They have launched FT linked credit card, Hello Cashback credit card. So individuals can go and do fixed deposit in their bank, and say for example they do a fixed deposit of 1 lakh rupees, then their credit card will also have a limit of 1 lakh rupees. They will be getting the interest rate as per the account, and this 1 lakh credit card will be converted into a credit card where you will use the credit, but you have to refill also that credit then. Correct? So name of the card is Hello Cashback credit card. Credit limit of 100% of FD value will be provided, and other benefits is 2 lakh personal accident cover and 25,000 rupees purchase protection will also be provided. Moving on to economy and business, students, Air India and Lufthansa Group, they have signed a memorandum of understanding to strengthen the India-Europe air connectivity. I repeat, Air India and Lufthansa Group, they signed an MOU to explore the formation of a joint business partnership aimed at enhancing the air connectivity between Air India and Lufthansa Group's carriers and subsidiaries. Correct? Directly remember this, students. Next is Reliance Consumer Products forms majority owned joint venture with Nigeria's TGI Group. I repeat, Reliance Consumer Products Limited, the fast-moving consumer goods arm of Reliance Industries Limited, they have signed a definitive agreement to form a majority-owned joint venture with Tropical General Investment Group of Nigeria. This partnership marks a significant step for Reliance, right, as now they are having global expansion. And with this global expansion, now this is a fast-moving consumer goods company. So with now you will be seeing that this company will be selling these FMCG groups or products in Nigeria also. Right? This is under their global expansion plan. Next is awards and recognition, students. Rajnath Singh has facilitated Bhavya Bharat Bhushan Award 2026 in Coimbatore, Tamil Nadu. I repeat, our Union Minister Rajnath Singh, our Defence Minister, right, he has inaugurated the Bhavya Bharat Bhushan Award. This was during the Mahashivratri celebration at the Isha Yoga Center in Coimbatore, Tamil Nadu. So where was this? At Isha Yoga Center in Coimbatore, Tamil Nadu. This is the location. Facilitated by Rajnath Singh, our Defence Minister. This was instituted by this inaugural edition of Bhavya Bharat Bhushan Award. It was instituted by Isha Foundation, and this is the inaugural edition, means this is the first edition of this award. So question can be asked that which edition of Bhavya Bharat Bhushan Awards were facilitated lately? It was the first edition. Then this award is given in certain categories such as science and technology, arts and culture, sports,
national security, corporate leadership, literature, community welfare, and so on. And these are the awardees here. Moving on, students, and if we see about science and tech, Nambi Narayan, A.S. Kiran Kumar, for arts, Aramvalli and Rajam, for literature, Vikram Sampath, for sports, Saina Nehwal, right? They have been honored here. Next is appointments and resignation, students. Tariq Rahman has been sworn in as the 11th Prime Minister of Bangladesh. So who has been appointed as the 11th Prime Minister of Bangladesh? Tariq Rahman. Correct. And here this Tariq Rahman swearing in ended the 18-month interim administration that was led by Muhammad Yunus. Muhammad Yunus was leading the interim government for Bangladesh, right? He served as the chief advisor from August 2024 to February 2026, and recently on 16th of Feb he resigned. So as you can see him in the picture, he has been appointed as the 11th Prime Minister of Bangladesh, Tariq Rahman. Next, students, science and technology. First indigenous cadet training ship Krishna launched at the L&T Kattupalli in Chennai, Tamil Nadu. Take a note of this as you can see it in the picture. This is the first indigenously designed and built cadet training ship, that is Krishna. Krishna. This is Yard 18003. Correct. It is of Indian Navy. This was launched at the L&T Larsen and Toubro shipbuilding facility in Kattupalli near Chennai, Tamil Nadu. Right, students, very important. This newly inaugurated ship, it is the first of this cadet training ships, right? And it has been constructed by L&T and it has been named after river Krishna. That Krishna river is India's third longest river. Right, students? And if we see the dimensions here, it is in 122 meter in length. Speed is nearly 20 knots. It displaces around 4,700 tons of water. Endurance nearly 60 days at sea it can withstand. Next is obituary. Oscar-winning filmmaker Frederick Wiseman has recently passed away at the age of 96 in Massachusetts, USA. He was born on 1st January 1930 in Boston, Massachusetts. Then in 2016, he received the Honorary Academy Award, that is Oscar, from the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences in recognition of extraordinary contribution to the documentary filmmaking. Next is state news. Assam's Finance Minister Ajanta Niyog has presented 62,295 crore rupees interim budget for FY27. Right? Take a note of this, students. Here if we look at the budget here, that this interim budget was presented as a vote on account aimed to cover expenditure for the initial months of the next financial year. While presenting the budget, Finance Minister Ajanta Niyog highlighted that the state is expected to become 10 lakh crore rupees economy by 2028. Right? Apart from this, if we see the per capita or the budget amount, it is 62,294 crore rupees. Also, it is projection here is that Assam state here will become a 10 lakh crore economy by 2028. And in FY26, the per capita income is expected at 1,85,429 rupees. And the gross state domestic product, it has seen a almost 45% jump in the last 5 years. Right, students? So these were your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. When will the revised risk weighting framework issued by RBI for NBFC exposure to infrastructure loans will come into effect from as notified on January? So they will be coming into effect from 1st of April 2026 onwards. Initially, RBI has proposed a stricter framework for risk weights on infrastructure loans provided by NBFCs, and these amendment directions shall be applied from 1st of April 2026 or from an earlier date when these directions are adopted by NBFC in entirely. Next, India's first maritime-focused NBFC, that is Sagarmala Finance Corporation Limited, commenced their lending operations and sanctioned loans worth approximately 4,300 crore rupees during the 51st board meeting held in December 2025. Next, identify the company that received the in-principle approval from SEBI to act as a sponsor and establish a mutual fund as announced in December 2025. It is Ashika Group. Next is the Asian Development Bank has approved a loan worth 4,100 crore rupees for phase 1 of the Musi Riverfront Development Project in Telangana as announced in January month. Next is name the bank that launched the capital gains account scheme for tax exempt
deposits effective from 1st of January. So you have to remember the date when it will be coming into effect from, and it will be helping the taxpayer spark uninvested long-term capital gains in January 2026 onwards. So if we look at the options here, it is ICICI Bank Limited. They have launched this capital gains account scheme for the tax exempt deposits effective from 1st of January 2026 onwards. Next, name the bank that partnered with TechFini in January to strengthen their UPI infrastructure and expand the digital payment services across India. It is Tamil Nadu Mercantile Bank. Next, name the payment service or payments company that became first in India and the Middle East and Asia Pacific region along with South Africa. So it is the first company in India, Middle East, Asia Pacific and South Africa to receive the International Organization for Standardization, that is IEC 42001 certification in January 2026. It is Financial Software and Systems, FSS. Next, choose the bank that launched the Zero Forex Diamond Reserve Credit Card in January, providing zero foreign exchange markup and exclusive travel and lifestyle rewards. It is IDFC First Bank. Next, which bank integrated the RBI Central Bank Digital Currency, that is CBDC, that is your digital rupee, into its Smart Gateway platform in January 2026? It is HDFC Bank. Next, identify the refreshed brand entity unveiled by the Federal Bank Limited in January in Mumbai, Maharashtra as a part of strategic brand refresh to signal modernization and future readiness. It is the Fortuna Wave. Next, RBI, they have cancelled the certificate of registration of how many NBFCs in January? So for 35 NBFCs, the certificate of registration was cancelled due to non-compliance of the regulation. Next is identify the financial institution that has launched the Vyapar business loan in January as a collateral-free credit solutions for MSME across semi-urban and rural areas. So identify that financial institution. It is Axis Finance Limited. Next is name the public sector bank that has secured in principle approval from RBI in January to switch from bank primary dealer business to set up a wholly owned subsidiary for undertaking standalone primary dealers business. It is Bank of Baroda. Next is mark the regulatory category under which Skydo received the final authorization from RBI in January to legally collect and remit payments from overseas customers to Indian businesses. So it is mark that regulatory category. It is payment aggregator cross border, right? They are able to receive basically on the behalf of the merchants from India as well as from outside India. Next, which fintech firm has secured the approval from RBI in January to operate as a payment aggregator, physical and payment aggregator cross border? So which is that fintech firm we are talking about? It is PayG. Next, identify the investment company that secured a contract from India Post Payments Bank in January 26 to launch a comprehensive digital investment platform. It is Choice Wealth Private Limited. Next, identify the regional rural bank that became the first in India to launch a fully solar powered mobile automatic teller machine van in January 2026. It is which company we are talking about? It is Tripura Grameen Bank. Next, students, you have to name that fintech company that has received the RBI's approval in January to operate as a payment aggregator for both online and offline payments across India. Which is this company we are talking about? It is Innovati Technologies Private Limited. Next is name the former chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India who was appointed to head the high-level committee constituted by the PFRDA for assured payouts under the National Pension System in January 2026. It is MS Sahu. Next is which private sector bank enabled Khajane to e-receipts via its net banking platform to facilitate online payments of state government taxes and fees in January 2026. It is Karnataka Bank. Next, mention that NBFC that secured a $350 million loan in multilateral funding from IFC, that is an international arm of World Bank and the Asian Development Bank in January 26. So which is that NBFC we are talking about here? It is Piramal Finance Limited. Next is RBI. They have issued the RBI Integrated Ombudsman Scheme 2026 aimed at simplifying the customer grievance redressal. From which date will this revised scheme will come into effect from? This will be coming into effect from 1st of July 2026 onwards. Next is how much amount was approved by World Bank in January?
2026 for the West Bengal Health System Reform Program aimed at improving the quality of life and life expectancy through equitable healthcare access. So how much amount was approved by the World Bank here? It was $286 million that was approved. And the loan term here is of 16.5 years with a grace period of 3 years. Next, choose the insurance company that launched the Smart Platina Advantage Guaranteed Saving Plan in January, offering long-term guaranteed benefits along with life insurance protection. It is SBI Life Insurance. Next, identify the country where IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited sanctioned their first international green energy loan in January 2026 to fund a 100 megawatt photovoltaic solar power project. So identify that country. It is Zambia. Next, choose the organization that was recognized by RBI as a self-regulatory organization for all authorized dealers in January under the Omnibus SRO framework. It is Foreign Exchange Dealers Association of India. Next is which organization did Canara Bank partner with in January to integrate UPI into its payment application Canara AI Pay, becoming the first bank to adopt plug-in based UPI solution. So first company to become or first bank to adopt plug-in based UPI solution, it is NPCI Beam Service Limited, right? It is Canara Bank, and with which organization? It was NPCI Beam Service Limited, that is NBSL, with which they partnered here. Let's move to the homework section, students. First question is, tell me recently who has been appointed as the chairman of Gift City. Second question, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of City Union Bank and who he will be succeeding. Third question, students, tell me recently who has been appointed as the chair of USISPF Global Value Chains Committee. Tell me the full form of this and who has been appointed as the chair here. Fourth question, students, recently name that teacher. She's an Indian teacher, I'll give you that hint. She has been honored with the Global Teacher Prize, with the Global Teacher Prize. Name her. Fifth question, recently InSpace has selected three private companies for satellite bus plan. What are these three companies that were selected by InSpace? So these are your homework questions, students, and I need to see maximum participation here. And students, I am seeing the students are not subscribing to us. I want to see maximum subscription from all the students who are watching this video, right? If you haven't subscribed yet, do hit the subscribe button. It will motivate me to make better content for you in the long run. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेहतरीन सेशन रहेगा आप सभी के लिए, आखिर तक जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत विस्तार, ये एक डिजिटल कंपेनियन लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए इन राजस्थान। देन पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ को अभी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑब्जर्व किया गया ऑल चिकी स्क्रिप्ट्स का इन न्यू दिल्ली। ये क्या है? 100th ईयर सेलिब्रेशन। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेहतरीन सेशन रहेगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड हमारे कोर्सेज को जाके आप ज़रूर से चेक कीजिए। बहुत ही बेहतरीन एंड अफोर्डेबल प्राइजेस पे हम आपके लिए कोर्स लाते हैं, जिससे आपकी जो लर्निंग है टॉप नॉच हो सके। लेट अस रिवाइज सम वन-लाइनर स्टूडेंट्स। Let's start with national news. WWF, that is World Wildlife Fund of India, has developed Goa's first biodiversity and cultural feature map for school students. Then India and UK has signed a social security agreement for temporary employees. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Seva Tirath and Kartavya Bhavan complexes. Then CDOT, that is Center for Development of Telematics, and Rashtriya Raksha University, they have signed a memorandum of understanding to boost telecom and cyber security innovation. We discussed this day before yesterday. Then Black Swan Summit India began in Bhubaneswar to boost AI and digital finance ecosystem, and AI Summit is currently going on in New Delhi at Bharat Mandapam. Then Alwar became India's first district to achieve 100% insurance coverage under Insurance for All by 2047. Alwar is in Rajasthan.
Then Rajnath Singh, our defense minister, has flagged off joint India expedition to Mount Aconcagua. Where is this? This is in Argentina. Next, IIT Madras Research Park, they have launched 600 crore rupees Unicorn Frontier Fund for deep tech startups. Unicorn is when you achieve $1 billion in your market cap, and deep tech startup include your robotics, cybersecurity, quantum, AI, and everything. Then India-US trade deal has opened $118 billion global textile market for the government, and it was the interim deal that was signed. India-US interim deal. Next, Plast India 2026 kicked off in New Delhi. Here the focus was on plastic, on how we can make plastic sustainable. Then Spain became the first European nation to ban social media for the children under 16. VOC port became the first in India to deploy anti-drone system. Where is this VOC port? It is in Odisha. I correct? It is in Tamil Nadu, not Odisha, it is in Tamil Nadu. Then MCA, they have approved the merger of 17 power grid subsidiaries under corporate restructuring plan. Then Delhi police, they have launched the Operation Shastra to curb online threats and fear mongering. Center, that is the government of India, Nagaland government and ENPO, they have signed an agreement to form Frontier Nagaland Territorial Authority. Then Goa, they became the second state to publish the Bird Atlas. Agriculture Minister or Agriculture Ministry, they have signed a memorandum of understanding with the Department of Post for fully traceable agri input sample logistics. Then 39th Suraj Kund International Craft Mela 2026 began in Haryana with the theme Vocal to Global. And PFC board, they have cleared the merger with the REC Rural Electrification Corporation to boost scale efficiency for the NBFCs. Then Kerala, they have launched Neophyte ID for invasive plant detection. And Andhra Pradesh, they have announced the exclusive 30-acre women industrial park. Next is India, they have risen to 45th rank in the Network Readiness Index. Yota and Bhashini, they have deployed sovereign AI cloud showcasing India's readiness for population scale AI. Then India has been named as the country of the year at the BioFact 2026 in Germany. Telangana, they have launched ICOM to boost the AI ecosystem and global innovation. Then Assam state, they have launched Atal Vichal Agragami Assam scheme that will boost the research and innovation in the agriculture sector as well as with the help of AI. Then Gujarat government, they have signed a letter of intent with Starlink to achieve Digital India vision, and also Starlink has partnered with Maharashtra government in order to provide satellite internet even in the remote areas, and along with government in Gujarat state also we will be seeing that satellite internet will be provided by Starlink. Then State Bank of India, they have crossed 10 lakh crore rupees market cap and has joined the elite club of the India's top firms. Then Mumbai's Coastal Road became India's first musical path playing Jai Ho. Then Delhi, they have launched Lakpati Bitiya Yojana for the girls from economically weaker families. Then Delhi, it became the first state to partner with Bharat Taxi cooperative platform to structure the urban taxis services. And Bharat Taxi, this will be basically a rival for the Ola and Uber. So these were your some one-liner students. Let's move on. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स. अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा डिजिटल कंपेनियन लॉन्च किया गया जिसका नाम है भारत विस्तार. इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया, जयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है. अब ये जो भारत विस्तार है, पहले तो इसकी देखते हैं ये है क्या. ये है भारत वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, राइट. इसको कहाँ पे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इन दुर्गापुर जयपुर राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया. ये एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आपका फार्मर्स की रजिस्ट्रीज, लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप डाटा, ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड रहेंगी एंड आपको एक फार्मर्स को एक बेटर सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगी. इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए फार्मर्स एक टोल फ्री नंबर पे डायल कर सकते हैं, जो टोल फ्री नंबर रहेगा 155261. एंड इस टोल फ्री नंबर पे जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आपसे बात करेंगी, वो है एक AI वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम रहेगा भारती, राइट. यहाँ से इस टोल फ्री नंबर से वो अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे सर्विसेज में जैसे आपको मान लो कोई एग्रीकल्चर का डाटा चाहिए, आपको पेस्ट अलर्ट्स देने हैं, सॉइल हेल्थ के बारे में जानना है, मार्केट प्राइसेस के बारे में जानना है, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में जानता है, लैंड के प्राइसेस के बारे में जानना है, राइट, वेदर फॉरकास्ट जानना है, तो वो सारी सर्विसेज अब फार्मर इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक्सेस कर सकता है, जो भारत विस्तार के अंडर आती है. करेक्ट. एंड ये भारत विस्तार अभी लेटली कुछ स्टेट्स में लॉन्च किया गया है. पर्टिकुलरली जो पहला फेज रहेगा इसका फेज 1 में महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान एंड गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है.
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवेल किया इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को, राइट। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, बेसिकली ये पार्ट रहेगा इंडिया एआई मिशन का, जहाँ पे सेफ्टी के ऊपर बात की जाएगी कि एआई को हम जो भी कंपनी इंडिया में यूज़ करेगी वो सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान देगी, राइट। एंड एआई को हम पॉजिटिव वे में डेवलप करेंगे, जो भी उस पर गवर्नेंस आएगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोग जो भी गाइडलाइंस बनाएंगे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो भी कोड्स रहेंगे वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, राइट। एंड सोसाइटी के भले के लिए, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट। हम यहाँ पे इनको एआई को पॉजिटिवली यूज करेंगे, ना कि उसका नेगेटिव यूज। यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स आए हैं, जैसे जो ट्रस्ट के ऊपर सबसे पहली बात की जाएगी, पीपल फर्स्ट अप्रोच यहाँ पे फॉलो की जाएगी, इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, फेयरनेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एंड जो भी उन एलएलएम्स को, जो भी आई मॉडल्स को बनाएगा वो अकाउंटेबिलिटी इसकी जरूर लेगा, एंड सेफ्टी तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एज द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा आपसे कि अभी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कौन सा राइट डिक्लेयर किया गया है, तो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। किस आर्टिकल के अंदर डिक्लेयर किया गया है, आर्टिकल 21 के अंदर डिक्लेयर किया गया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसको अभी नोट करके चलो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ। आर्टिकल 21 ये क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है। इसके अंदर यहां पे डिक्लेयर किया गया, इसी के अंदर यहां पे सभी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स को एक गाइडलाइंस दी गई है कि सैनिटरी नैपकिन्स वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, एसेसिबल कराएंगे बच्चों को, स्कूल गर्ल्स को जो कि 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक है, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन स्कूल में प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल्स में जो भी टॉयलेट्स होंगे वहाँ पे रनिंग वाटर होना चाहिए, सोप होने चाहिए, एंड सेफ डिस्पोजेबल सिस्टम होना चाहिए इन सैनिटरी पैड्स का, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने इनॉग्रेट किया सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ ओई चिक्की स्क्रिप्ट इन न्यू दिल्ली। ये एक पावरफुल सिंबल है ऑफ द सेंट्रल आइडेंटिटी, एंड ये बेसिकली संतली लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ग्लोबली एक ऑनर दिया गया है। यहीं पे एक कमेमोरेटिव कॉइन एंड एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया है संतल कम्युनिटी को ऑनर करने के लिए। सैनिटरी सेलिब्रेशन होता है 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा होस्ट किया गया पहला यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑन SALW कंट्रोल इन जबलपुर मध्य प्रदेश। SALW क्या है, स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल, राइट। एशिया पैसिफिक रीजन की ये स्पेसिफिकली एक बेसिकली फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। कहां पर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट इन जबलपुर मध्य प्रदेश। एंड ये पहली बार एशिया में होता हुआ दिख रहा है, एंड एशिया में भी बोले तो पहली बार इंडिया में हमारे होता हुआ दिख रहा है। इंडियन आर्मी इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, इसको होस्ट कर रही है, राइट। यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन SALW कंट्रोल। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला बी कॉरिडोर्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। मान लो ये नेशनल हाईवे है, इसके अलोंग ये बी कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। बी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन होता है कि मेल फ्लावर से पॉलन्स लेके फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने का ये काम करती है, जिससे पॉलिनेशन होती है, जिसके बदौलत आप जो फ्रूट्स देखते हैं, जो फ्लावर्स देखते हैं वो होते हैं, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, एंड इसी को कंजर्व करके प्रमोट करने के लिए ये बी कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए गए हैं नेशनल हाईवेज के अलोंग, जो कि इस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस अभी डिस्कवर किए गए इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में। देखो ये क्या दर्शाता है कि जो इंडिया का कल्चर है ना, वो बहुत पहले पूरी दुनिया में फैला हुआ था, राइट। जब हमें 1st to 3rd सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर हमें ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, संस्कृत स्क्रिप्ट्स, प्राकृतिक स्क्रिप्ट्स देखने को मिल रही हैं, वो भी इजिप्ट जैसे एरिया में जाके, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा कल्चर था वो बहुत वास्ट था एंड पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एंड ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर 30 इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, संस्कृत स्क्रिप्ट एंड प्राकृतिक स्क्रिप्ट्स के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स हमारे लिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है इंडिया का पहला नेशनल बायो बैंक फॉर LSDs लॉन्च किया गया अहमदाबाद
गुजरात में, राइट। ये क्या है, कहाँ पर, फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंड्रोक्रोलॉजी, फ्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, अहमदाबाद गुजरात में इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नेशनल बायो बैंक, ये रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपी डेवलपमेंट को ये प्रमोट करेगा। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। डिफेंस, डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल आई रिपीट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं, आई करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। इनके द्वारा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च किया गया एट चिंतन शवर। ये बेसिकली क्या कहता है कि यूपीआई, हम जानते हैं, देखो बेसिक समझो, यूपीआई से जो हमारा पेमेंट सिस्टम है ना इंडिया का, उसमें रेवोल्यूशन देखने को मिला है, राइट। आज के टाइम पे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो लीड कर रही हैं। अगर हम 2021 से 2025 का डाटा देखें तो जो पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स, वो 11 टाइम्स हमें देखने को मिली हैं इन वॉल्यूम्स। अब आप कोई भी पेमेंट करने जाते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कैश का तो आप यूज़ ही नहीं करते हैं, राइट। तो यूपीआई एक गेम चेंजर रहा है इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट किया जा सके, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर किया जा सके, एंड जो कंपनीज यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा था यहाँ पे, करेक्ट। तो उसको यहाँ पे उसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो बताती है जो बजटरी एलोकेशन है ऑफ ऑलमोस्ट 8,276 करोड़ रुपीस यहाँ पे इंसेंटिव्स के तौर पे दिए गए हैं सिंस FY22, ताकि डिजिटल प्रमोशन, डिजिटल पेमेंट्स को हम प्रमोट कर सकें, करेक्ट। चलिए फिर आ जाते हैं, आरबीआई ने अप्रूव किया एयरटेल मनी को टू ऑपरेट एज अ टाइप 2 NBFC ND। ये क्या है, अब यहाँ पर जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC बन गई है एयरटेल मनी, ये रिटेलर से अब पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएंगी, बट ऑन द अदर हैंड ये अपने सर्विसेज, जैसे मान लो इनको कोई लोन देना है, क्रेडिट प्रोवाइड कराना है, वो सारी सर्विसेज ये कर पाएंगी। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, आई रिपीट, आरबीआई इनको, सॉरी एयरटेल मनी, इनको आरबीआई का अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज अ टाइप 2 नॉन डिपॉजिट NBFC के तौर पे, राइट। ये इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के तरह काम करेगी, ये इन्वेस्टमेंट कर पाएगी एंड जो भी क्रेडिट रिलेटेड जैसे लैंडिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट कर पाएगी, लेकिन डिपॉजिट्स नहीं ले पाएगी पब्लिक से। मूविंग ऑन, IDFC फर्स्ट बैंक, इनके द्वारा अभी एक FD लिंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड। 100% FD वैल्यू, मान लो आप 1 लाख रुपए की FD करा देते हैं यहाँ पे अंडर दिस हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, एंड उस क्रेडिट कार्ड को आप स्पेंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको अगर स्पेंड करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा अगर आप वापस पे नहीं करते हो, जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका 1 लाख रुपए की डिपॉजिट है, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो FD का इंटरेस्ट होता है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से ये आपकी क्रेडिट कार्ड से, आपकी FD से यहाँ पे आपको क्रेडिट बना दी गई, करेक्ट। 2 लाख रुपए तक का पर्सनल इंश्योरेंस रहेगा इसके अंदर, एंड 25,000 रुपए का परचेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगा ये। मिनिमम FD जो लिमिट होगी यहाँ पे 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, एंड आप उसके बाद कितनी भी करा सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। एयर इंडिया एंड लुफ्थांसा ग्रुप, इन्होंने एक MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन एयर इंडिया यूरोप एयर कनेक्टिविटी को, तो दोनों रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये MOU साइन किया गया है। फिर आ जाते हैं रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन्होंने फॉर्म किया मेजॉरिटी ऑन जॉइंट वेंचर को विद नाइजीरिया TGI ग्रुप। तो बेसिकली क्या है, ये एक FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनके ग्लोबल एक्सपेंशन प्रोग्राम के अंडर ये अब ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ इन्होंने पार्टनर किया ऑफ नाइजीरिया, ताकि अब ये FMCG कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, एंड FMCG गुड्स को अब ये नाइजीरिया में बना पाएंगे, बेसिकली नाइजीरिया में सेल कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट USA की कंपनी है, वो इंडिया में आके गुड्स बेच रही है, ऑपरेट कर रही है। मैकडी USA की कंपनी, डोमिनोज USA की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है, गुड्स बेच रही है। ऐसे ही अब इंडिया से रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये कंपनी वहां पे जाके नाइजीरिया में अपने गुड्स वहां पे सेल कर पाएगी। मूविंग ऑन, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, राजनाथ सिंह ने फैसिलिटेट किया भव्य भारत भूषण अवार्ड 2026 को कोयम्बतूर तमिलनाडु में। ये भव्य भारत भूषण अवार्ड, सबसे पहले तो याद रखेंगे ये इनॉग्रल एडिशन है, मतलब पहला एडिशन है इस अवार्ड का जो भी प्रेजेंट किया जाएगा।
किन के द्वारा इसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया? राजनाथ सिंह जी के द्वारा, राइट। इनॉग्रल एडिशन है, फर्स्ट एडिशन। ईशा फाउंडेशन के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। कहाँ पे दिया जाएगा? ईशा योगा सेंटर जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में, वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा इस अवार्ड से। इसमें साइंस एंड टेक, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट लीडरशिप, लिटरेचर, कम्युनिटी वेलफेयर, इन कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाएगा। ये कुछ अवार्डीज यहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें साइंस टेक में नाम्बी नारायण, एस किरण कुमार, आर्ट्स में अलारम वाली, एन राजम, लिटरेचर में विक्रम संपत, स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल, इनको ऑनर दिया जाएगा। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। तारिक रहमान ये 11वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के। अभी तक हम जानते हैं इंटर्म गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पर, राइट। एंड मोहम्मद यूनस के द्वारा लेड की जा रही थी 18 महीने से, अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक, और अब 16 फरवरी को मोहम्मद यूनस वहाँ से रिजाइन कर देंगे। तो अब तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, 11वें प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। पहला इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा, इसको लॉन्च किया गया एट LNT कैंपस इन कटुपल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, राइट। ये आपका कैडेट ट्रेनिंग शिप है। ये फर्स्ट ऑफ द थर्ड कैडेट ट्रेनिंग शिप है जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नाम रहेगा इसका कृष्णा, करेक्ट। कृष्णा रिवर है इंडिया की, जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट। उसके नाम के बिहाफ पे ये नेमिंग की गई है इसकी। एंड अगर हम इसकी बात करें तो यार्ड 18003 ये भी याद रखेंगे। पहला इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप रहेगा। 122 मीटर की इसकी लेंथ है, 20 नॉट तक की इसकी स्पीड है, एंड 4700 टन इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मूविंग ऑन टू ऑबिटरी स्टूडेंट्स, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर फ्रेडरिक वाइजमैन, इनका निधन हो गया 96 की एज में इन मैसेच्यूसेट्स USA। 1930 में इनका जन्म हुआ था बॉस्टन में, एंड इनको 2016 में ऑनररी एकेडमी अवार्ड ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी के द्वारा 62,295 करोड़ रुपए का इंटर्म बजट प्रेजेंट किया गया है FY27 के लिए। इनका टारगेट है कि 2030 तक हम 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट। हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, AI को हम बहुत अच्छे से अपनाएंगे। इवन यहाँ का जो स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 45% इंक्रीज होता हुआ दिखा है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है वो है 1,85,429 रुपए की, राइट। मार्क करेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। काफ़ी बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट, इसको मिस मत करा करो। MCQ फॉर्मेट में हम रिवाइज कराते हैं, एंड टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं ये MCQ के जो आपकी रिवीजन में आते हैं। नेक्स्ट, अभी सेबी ने मैंडेट किया NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट सर्टिफिकेशन को फॉर AIF कंप्लायंस ऑफिसर्स। कब से लागू होगा? ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, एंड लोगों को ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा जो भी AIF कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट, व्हेन विल बी द रिवाइज्ड रिस्क वेटिंग फ्रेमवर्क इशूड बाय RBI फॉर NBFC एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स लागू होगा, जो कि अभी जनवरी 2026 में आया है। तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया का पहला मैरीटाइम फोकस NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अपनी लैंडिंग ऑपरेशंस को कमेंस किया, एंड सैंक्शंस लोन्स वर्थ कितना? तो इनके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए, एंड इन्होंने 4,300 करोड़ रुपए के यहाँ पे लोन सैंक्शन किए ड्यूरिंग द 51st बोर्ड मीटिंग, जो कि दिसंबर में हुई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू एक्ट एज अ स्पॉन्सर एंड एस्टैब्लिश्ड अ म्यूचुअल फंड एज अनाउंस्ड इन दिसंबर। तो वो है अशिका ग्रुप। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया अ लोन वर्थ 4100 करोड़ रुपीस, ताकि जो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है तेलंगाना में, जो मूसी रिवर है उसके साथ का जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इकोलॉजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये अमाउंट अप्रूव किया गया। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम को, ताकि जो टैक्स एग्जाम डिपॉजिट्स हैं, राइट, वो लाए जा सकें। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा, ये डेट जरूर मार्क करेंगे। एंड इससे जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो पैसा है उसको यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। तो ये ICICI बैंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया टेकफिनी के साथ जनवरी में टू स्ट्रेंथन देयर UPI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। वो कौन सा है? वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट, नेम दैट पेमेंट्स कंपनी जो कि फर्स्ट इन इंडिया बन गई
एंड मिडल ईस्ट में फर्स्ट है, एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट है एंड साउथ अफ्रीका में फर्स्ट है जिनको रिसीव हुआ ISO 42001 सर्टिफिकेशन जनवरी के महीने में। वो है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है ये हाईलाइट करता है इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स टू द यूज ऑफ AI एंड ट्रस्टवर्दी यूज ऑफ AI इन देयर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड जनवरी में, जो प्रोवाइड करता है जीरो फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप एंड एक्सक्लूसिव ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स को। वो है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, फिर अभी रिसेंटली किस बैंक ने इंटीग्रेट किया RBI का CBDC जो कि है डिजिटल रुपी इनटू देयर स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म? वो है HDFC बैंक। इससे रिलेटेड, इस डिजिटल रुपी CBDC से रिलेटेड आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी को जिन्होंने अनवेल किया फेडरल बैंक लिमिटेड, unveiled by Federal Bank Limited in January in Mumbai, Maharashtra as a part of strategic brand refresh to signal modernization and future readiness। तो वो कौन सी रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे लॉन्च की है? वो है द फॉर्चूना वेव। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कितने NBFCs अभी बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस? तो 35 NBFC को यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लॉन्च किया व्यापार बिजनेस लोन इन जनवरी एज अ कोलेटरल फ्री क्रेडिट सॉल्यूशन फॉर MSMEs अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। वो है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, उस PSB पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI इन जनवरी 2026 टू स्विच फ्रॉम बैंक प्राइमरी डीलर बिजनेस टू सेटअप अ होली ओन सब्सिडरी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर बिजनेस। वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन 5 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द रेगुलेटरी कैटेगरी अंडर विच स्काइडो इन्होंने रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन जनवरी टू लीगली कलेक्ट एंड रेमिट पेमेंट्स फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर्स टू द इंडियन बिजनेसेस। वो है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ से इन पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हो गया कि मर्चेंट्स के बिहाफ पे पेमेंट सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट, किस फिनटेक फर्म ने सिक्योर किया अप्रूवल फ्रॉम RBI इन जनवरी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल एंड पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? वो है पेजी। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो इन्वेस्टमेंट कंपनी को जिन्होंने सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन जनवरी टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। वो है चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस रीजनल रूरल बैंक, वो पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया पहला फुल्ली सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये पहला ATM वैन जो कि सोलर पावर्ड है ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स अक्रॉस इन इंडिया। तो वो है इनोविटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ IBBI जिनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ अ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय PFRDA फॉर एश्योर्ड पे आउट्स अंडर द नेशनल पेमेंट सिस्टम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम इन जनवरी 2026। तो वो कौन है? वो है MS साहू। इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एनेबल किया खजाने टू ई-रिसिप्ट्स को वाया नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करेगा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फीस को जनवरी 2026 से? तो ये है कर्नाटका बैंक। इन्होंने ये खजाने टू ई-रिसिप्ट्स को लॉन्च किया है, एनेबल किया है। नेक्स्ट, उस NBFC का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया $350 मिलियन इन मल्टीलेटरल फंडिंग फ्रॉम IFC ये वर्ल्ड बैंक का ही आम है अलॉन्ग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक इन जनवरी 2026। तो वो कौन सा है? वो है पीरामल फाइनेंस लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, $350 मिलियन की फंडिंग है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने इशू किया RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम को 2026 जो सिंप्लीफाई करती है कस्टमर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल को। फ्रॉम विच डेट विल दिस रिवाइज स्कीम्स कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? तो ये कब से लागू हो जाएगी? 1 जुलाई 2026 से लागू होती हुई दिखेगी। इसके बाद आ जाते हैं, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर वेस्ट बंगाल हेल्थ सिस्टम्स रिफॉर्म्स प्रोग्राम? मतलब वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेटर किया जाएगा इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो $286 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए। 16.5 साल का ये लोन रहेगा एंड 3 साल का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी को चूज करो दैट लॉन्च द स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज गारंटेड सेविंग प्लान जनवरी में जो ऑफर करता है लॉन्ग टर्म गारंटेड बेनिफिट्स अलॉन्ग विद लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जहाँ पे IREDA ग्लोबल एनर्जी
ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड, इन्होंने सैंक्शन किया पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन इन जनवरी, जो फंड करेगा 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्रोजेक्ट को, तो वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करो जहां पे दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय RBI एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द ऑथराइज्ड डीलर अंडर द ऑमनिबस SRO फ्रेमवर्क, वो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को कैनरा बैंक ने के साथ पार्टनर किया गया इन जनवरी, या किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैनरा बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया टू इंटीग्रेट UPI इनटू द पेमेंट एप्लीकेशन, जो कि है कैनरा AI1 पे, जो कि पहला बैंक बन गया टू अडॉप्ट द प्लग इन बेस्ड UPI सॉल्यूशन। तो वो कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन, वो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स, करेक्ट, वो है NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा, NPCI भीम सर्विस लिमिटेड। इन्होंने कैनरा बैंक के साथ मिलके पहला ये बैंक बन गया जिन्होंने अडॉप्ट किया प्लग इन बेस्ड UPI सॉल्यूशन को। लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। Second question, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of City Union Bank and who he will be succeeding. Third question students, tell me recently who has been appointed as the chair of USISPF Global Value Chains Committee. Tell me the full form of this and who has been appointed as the chair here. Fourth question students, recently name that teacher. She's an Indian teacher, I'll give you that hint. She has been honored with the Global Teacher Prize, with the Global Teacher Prize. Name her. Fifth question, recently InSpace has selected three private companies for satellite bus plan. What are these three companies that were selected by InSpace? So these are your homework questions students, and I need to see maximum participation here. And students, I am seeing the students are not subscribing to us. I want to see maximum subscription from all the students who are watching this video, right? If you haven't subscribed yet, do hit the subscribe button. It will motivate me to make better content for you in the long run.